Hey everyone, welcome back to our channel. Start Kathan dictation in 5 seconds. Start. Mr. Deputy Chairman, Sir, our beloved President, in his address to members of Parliament on 17th February, has given a very comprehensive and realistic picture of India and India's relation with the outside world. It is a matter of gratification indeed that we have started coming out of the economic stagnation which bedeviled the nation for the last couple of years. More than 70% of the people are engaged in agriculture. Nearly 50% of our income comes from agriculture. That being so, it is but natural that we have to concentrate on agriculture and make conscious efforts to increase our output. Our agricultural production has more than doubled in the last 2 decades, from a total production of 50 million tons when we achieved independence. Food grains production has gone up to a 1000 million tons. In spite of many scientific and technological developments, agriculture still has to depend to a large extent on the monsoons. No scientific method has yet been evolved to control rains, but efforts at rain making should continue. Even so, India had faced a cycle of adverse monsoons over the last few years as a result of production in 1992 to 93 went down to 900 million tons. There was unprecedented and widespread drought conditions throughout the major part of India. In the face of these adverse conditions, we have braved the difficulties with courage and fortitude. During 1993-94, the total rice production stood at around 300 million tons. This is not an insignificant achievement. Other cash crops like jute, cotton, and sugarcane had also shown significant improvement. India is likely to have a total jute crop of 150 lakh tons. Cotton production will touch an all-time record of nearly 200 lakh bales. Sugar output is put at 300 lakh tons, out of which 100 lakh tons is exported. These are significant pointers to a meaningful policy being followed by the government. Thanks to the realization and strengthening of the public distribution system, India has been able to look after the minimum needs of the most vulnerable sections. The public distribution system needs nearly 10 million tons of food grains annually. The government is confident of meeting this obligation without much difficulty. Plans for investments in irrigation projects, fertilizer plants, and hydro
Hydel projects should be pushed on far footing. Many irrigation projects are pending clearance from the center because of river water dispute that are existing between the states. Recently, a silver lining was seen in the sky with the three chief ministers of Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala agreeing in principle to constitute the Kaveri River Valley Authority to settle the allocation of water for each state. Unfortunately, it has not borne fruit. I would again urge the ministers for agriculture and irrigation to request the chief ministers again to sit at the table and agree to constitute the Kaveri River Valley Authority so that these disputes can be solved once and for all. There are similar river water disputes in other areas. For example, with regard to sharing of Narmada waters, there is dispute between the Gujarat and Madhya Pradesh. I would urge that all these river water disputes should be frozen and river valley authorities should be set up once and for all to settle the allocation of water and also to go ahead with the construction of irrigation projects. Coming to industry, sir, we all know that the growth rate of industry was almost zero in 1973-74. Thanks to progressing policy of vigorous implementation of those policy, the growth rate now is 3.5%. With efforts to ensure fuller utilization of capacity and assurance to supply scarce industrial raw material at international prices, it is possible that the current year may turn out a better picture for industry. The kingpin of industrial growth lies in coal, steel, and power. Coal production, which was 80 million tons last year, has improved to 90 million tons by now. There is no longer any shortage of steel. Thermal power has gone up by 40% and hydel power in DVC, as has already been stated by the President, has gone up by 34%. There is still power shortage in many states of India, particularly in Tamil Nadu and to some extent in Karnataka, Haryana and Punjab. So the power projects should be given top priority, and the power project of Kalindi, for which the foundation was laid by our beloved Prime Minister, should be taken up with speed and completed as early as possible. Mr. Deputy Chairman, sir, you are aware that we had to spend more for import of oil because of the rise in price of oil. It is encouraging to find that we have struck oil offshore in Bombay High, and it is expected that we will able to produce 100 million tons of oil from Bombay High. Stop.
तो ये रही 80 to 84 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन है, ये फ्लक्चुएट डिक्टेशन है। 80 वर्ड पर मिनट टू 83, 82, 84 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन है ये। ओके, सभी स्टूडेंट्स ज़रूर टाइप करें, लिखें। पहले 5 टाइम्स इसको लिखें। ओके, फिर इसके स्ट्रोक्स, जो डिफ़िकल्ट स्ट्रोक्स है उसकी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब भी करना है आपको। ओके, तो ज़रूर सेशन को अटेंड करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं उन्हें ज़रूर कवर करें, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं उन्हें आप देखेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। शॉर्ट है, ईज़िली आप बना लेंगे। ओके, एंड फिर सरलता से पढ़ लेंगे, तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट टाइम विजिट किए हों जो भी स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। एंड लाइक शेयर सेशन को ज़रूर करें, ठीक। एंड प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट, जो कि मैं हर सेशन में कहती हूँ। ये लाइन सिर्फ कहने का नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस क्योंकि बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करें, और एक पर डे, मतलब एक दिन में 3 डिक्टेशंस दी जाती हैं। जिन बच्चों की स्पीड कम है, जो स्ट्रोक्स बना लेते हैं, सीखे हुए हैं अभी अभी, तो उनको स्पीड ले आना है। तो फिर वो मॉर्निंग वाली डिक्टेशन जाती है 35 वर्ड पर मिनट, 45 वर्ड पर मिनट, 44 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट एंड 40 वर्ड पर मिनट। तो ये डिक्टेशंस आप अटेंड करें, ठीक है। धीरे धीरे आप 50-60 वर्ड पर मिनट पर आएंगे, तो फिर उसके बाद 80 वर्ड पर मिनट अटेंड करने लगेंगे सेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो और शाम 8 बजे 9 बजे दी जाती है, वो 100 वर्ड पर मिनट की होती है, तो वो डिक्टेशन भी आप अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। इस चैनल पर फ्लक्चुएट डिक्टेशन दी जाती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में इसी तरह फ्लक्चुएट डिक्टेशन बोली जाती है। एक ही स्पीड कहा गया है, जैसे कि 80 वर्ड पर मिनट, तो एक ही स्पीड में पकड़ के नहीं बोला जाता है, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, और तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक। सभी सेशंस ज़रूर अटेंड करें। हाँ, मॉर्निंग वाला सेशन जो टाइपिंग वाला और शॉर्ट हैंड, जो न्यू बच्चे हैं सीखे हुए, वो अभी लो स्पीड है उनकी, तो लो स्पीड वाले तो शॉर्ट हैंड लिखे ही, लेकिन जिनकी स्पीड 80 और 100 वर्ड पर मिनट है, वो बच्चे उस सेशन को इसलिए अटेंड करें कि वो टाइप कर सकें, क्योंकि 45-50 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट टाइपिंग होनी चाहिए। तो वो सेशन इसलिए अटेंड करें आप। और उसमें डिक्टेशन बोलने के बाद मैं ग्रामर रूल को डिस्कस करती हूँ, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो न्यू एग्जाम पैटर्न पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड एडवर्ब, फ्रेज और नाउन फ्रेज, ये सब जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो मैं डिस्कस करती हूँ, कहाँ कौन सा टेंस है। तो ज़रूर अटेंड करें, वेरी हेल्पफुल रहेगा। ओके, ठीक, थैंक्स।